Okay. Aishwarya ji, see, when I see an equation like this, what Yeah. am I trying to do when I am following the process of elimination? What am I trying to do? So you're trying to eliminate one of the variables. Like now in this one, you either try to take out B or C. Okay, So you have to make them equal. perfect. So what do you want to eliminate? Do you want to eliminate B or do you want to eliminate C? B. Okay, So then you multiply the first equation by 2 to okay, make perfect, 2B. perfect. So this would be the situation. Yeah. What should I do now? Then you leave a line and then put that equal to thing and then you change the signs. Okay. When I change the signs, what exactly am I doing? I am subtracting the two equations. Is it correct? Yeah. No doubt about this. No. Okay. So when I change the sign, basically I am subtracting the two equations. And why am I subtracting the two equations? Because then this B will eliminate. Yeah. Yeah. Okay. Perfect. Now let us look at this equation. Aishwarya ji. So Okay. in this equation, what should I do? So here you want to make the J same because the H is like, then you will have to multiply both equations if you want to make H same. So instead you make J same and multiply the whole thing by 2. Shabash. Very nice. So basically you want to eliminate J. Am I correct? Yeah. So that is why you are multiplying both sides of the equation by 2. Am I correct? Yeah. So this becomes 4h minus 2j is equal to 6 and 3h plus 2j is equal to 8. Am I correct? Yeah. What should I do next? Next you change the signs again. When do I change the sign? So now the 3h is positive. So you under that you write minus. 2j is again positive. Again you write minus, and 8 is also positive. So you write minus. Basically, you're subtracting the whole equation. Beta, that is what I am trying to ask you. If I have these two equations and Yeah. if I want to eliminate j, Yeah. should I add or should I subtract? You should subtract. Why should I subtract? So then, if it's 2j minus 2j, then there is like it gets eliminated. Why will minus 2j eliminate? Uh, no, then it will become minus 4j. So then you'll have to add it instead. Shabash. Is there any doubt still? No. Have you understood the logic? Yeah, I got it. Here, if I want to eliminate j, and this is minus 2j, and this is 2j, then I simply add the two equations. Why should I subtract? Okay. So you don't have to change the signs there. But the good thing about maths is that once you have understood the logic, you don't need to memorize anything. That is why, that is why I like maths, because once you have understood the logic, you need not remember anything. So, for example, minus 2 plus 2 and minus 2 minus 2. Minus 2 is? Minus 2 is minus 4. Minus 2 plus 2 is? 0. अब देखिए, if I subtract the two equations, see what will happen. This is minus, the plus 2j will become minus. This will become minus. Yeah, this will become minus 2j and minus 2j. This will become minus Yeah. 4j. So why should I subtract the two equations? You should add it. Are you? Yeah. The point is, the point is, you should understand the logic. You should understand if your aim is to eliminate j,
if your aim is to eliminate j, if you start subtracting like this, Yeah. ये देखिए, अगर आपने ऐसे सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया तो साइंस विल चेंज. फायदा क्या हुआ? इससे अच्छा आप ऐड कीजिए ना. सो व्हेन यू आर एडिंग, वी डू नॉट चेंज द साइंस. 4 + 3 = 7. तो अगर मैं Okay. 1 और 2 को ऐड करूंगा बेटा, तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा. Yeah. 7h would be equal to 14 and h would be equal to 2. Okay. ऐश्वर्या जी समझ नहीं आया? Yeah, got it. So Point that I'm basically, trying. when you're adding the equations, you don't have to change any of the signs. Correct. Okay. And that is what we were discussing in the last lecture also. So, and this is something that you have been doing from class 2. This is not a new funda here. When you say add 3 to 5, what do you say? 5 + 3. Is it correct? Yeah. When you say subtract 3 from 5, what do you do, Aishwarya ji? 5 minus 3. Why do you write minus here? Because you're removing it from 5. आपने basically, if you see, you have changed this sign of plus to minus. Have you understood or not? Yeah, yeah. तो ऐसा नहीं है कि equations में there is something new which is happening. So for example, what I'm trying to tell you is, अगर मैं दो equations को add कर रहा हूँ, 2h minus, let me write this as, so all I'm trying to tell you is कि this is a logic that you had understood in class 2 or class 1. I don't remember. I think class 1 में से आता है, class 2 में से आता है. Yeah. So 4h minus 2j is equal to 6. 3h plus 2j is equal to 8. अब अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो तो आप ये वाला फॉलो कर रहे हो ना यार. आप 3 को 5 में ऐड करना चाहते हो तो कर दो यार, कौन रोक रहा है आपको? इसको ऐड कर दो. But say for example somebody asks you कि सर आप सब्ट्रैक्ट कीजिए इन दोनों को. Say for some reason somebody tells you कि please subtract 1 and 2. तो आप क्या करेंगे? इसका साइन चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे. That Yeah. is what you did here. Yeah. And then it will become h minus 4j is equal to minus 2. So this is Yeah. correct answer. There is nothing wrong with this. But the point is, Nothing in gets this, eliminated. आप eliminate करना चाहते हैं. वो eliminate तो हुआ नहीं, वो तो बैठा हुआ है यहाँ पर ऐसा कैसा. I'm not saying that this is incorrect. All I'm saying is that if you want to solve each of these pairs of simultaneous equation by elimination, तो elimination अगर इस equation में आप eliminate करना चाहते हैं तो subtract करने का कोई फायदा नहीं है. ऐश्वर्या जी, have you followed the logic or not? Yeah, got it. तो आपको subtract करने का कोई फायदा ही नहीं है यार. लॉजिक समझिए, क्यों फायदा नहीं है? Because then that j doesn't get eliminated. It doesn't get eliminated. So all you need to do is add. अब add में do you need to remember कि साइन चेंज नहीं होते? नहीं सर, I don't need to remember because ये तो मुझे क्लास 1 और क्लास 2 में बता दिया गया था कि if I have to add two numbers, I do not change the signs. अगर अभी भी डाउट है तो और एग्जांपल ले लीजिए. So for example, आप लॉजिक जो उसके अंडरग्राउंड में जो लॉजिक बैठा हुआ है उसको प्लीज समझिए. सो फॉर एग्जांपल इफ समबडी टेल्स यू प्लीज ऐड -3 to 5, सो व्हाट डू? यू राइट, You subtract 3 from 5. अरे भैया वही बता रहा हूँ. आप जब -3 रखोगे तो -3 का साइन चेंज करोगे क्या? No. बट अगर इफ समबडी आस्क्स यू सब्ट्रैक्ट -3 from 5, अगर
-3 को आपको 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड. आप जब यहाँ -3 रखते हो, बेसिकली आप इसका साइन चेंज कर देते हो और आंसर आ जाता है 8. सर समझ नहीं आ रहा. ऑफ कोर्स आप इसको ऐसे लिखते हो 5 माइनस -3, 5 + 3 = 8. बट लॉजिक तो यही है ना. समझिए Yeah. मैं करेक्ट. समझिए मैं करेक्ट. Yes, sir. समझिए मैं करेक्ट. Yes, sir. So changing the sign when solving equations, when solving simultaneous equations, ये जो changing the sign है, this is not something new. This is what was told to you in class 1 or 2. क्लास 2, क्लास 3 में आपको समझा दिया था. अब तो सिर्फ उसका एप्लीकेशन जो था, ये जो फंडे का एप्लीकेशन है, वो आप यहाँ कर रहे हैं. ऐश्वर्या जी, एनी डाउट स्टिल? No, sir. So nothing has changed. अगर आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर दीजिए विदाउट चेंजिंग द साइन. अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो भी सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो साइन चेंज करना पड़ेगा. कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए. तो साइन चेंज करोगे तो ये h आ गया, ये -4j आ गया, ये -2 आ गया. मतलब पॉइंट इज हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ. बिकॉज आप तो एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे और ये एलिमिनेट कहाँ हुआ? ये तो बैठा हुआ है यहाँ पर. Yeah. And that is what we need to understand when we are doing the sums. So for example, ये देखिए, I understand your confusion, not an issue. Just see how these sums are done. I understand your confusion. वो सबको confusion रहती है. So for example, आपने ये कर दिया, ये कर दिया. Now you want to eliminate g. Because Yeah. you want to eliminate g, you are subtracting. जब आप subtract कर रहे हो Yeah. तो आपने साइन चेंज कर दिए और ये 7f आ गया और ये 21 आ गया. हाँ. और ये आंसर आ गया. फिर आपने जो ये f = 3 है, आपने लिख दिया कि सर ये 2 में आप डाल दीजिए, इक्वेशन 2 में डाल दीजिए. ये मेरी इक्वेशन 2 है, इसके अंदर आपने वैल्यू डाली. Yeah. ठीक है, ये ठीक है. बट ये जो प्रोसेस है, दिस इज अ प्रोसेस दैट वी फॉलो व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग टू इक्वेशंस. एनी डाउट अबाउट दिस? No, sir. अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ स्टार्ट होती है. एंड आई होप कि अभी तक आफ्टर दिस डिस्कशन यू वुड हैव अंडरस्टूड कि हो क्या रहा है. अब देखिए, अब यू हैव दिस इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2 से, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपने जो मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई. अब देखिए, ध्यान से देखिए, आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड नाउ. नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज -12, दिस इज -12, दिस विल बिकम -4L. Yeah. Yes, So you have to add it instead. -4L = -12. अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन जाएगा, ये रहता पहला वाला. And that Okay. is why you need to add the two equations, because when you add the two equations, this will eliminate. This will be equal to 8k = 8, k = 1, और फिर k की वैल्यू जो है वो यहाँ डाल दीजिए. ऐश्वर्या जी, एनी डाउट? No, sir. तो ये कंफ्यूजिंग है, अनडाउटेडली कंफ्यूजिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार. You will have to redo this. I hope you have understood. Yeah, okay, I'll redo them. हाँ, तो सारे आपके क्वेश्चंस डिस्कस कर लीजिए. ये देखिए, आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. तो यार माइनस करोगे तो ये तो एलिमिनेट नहीं होगा ना, आपको तो ऐड करना पड़ेगा. ऐड करना मतलब ये तामझाम मत करो, सिंपली ऐड द टू इक्वेशन. दैट इंप्लाइज 7m = 14m = 2. ऐश्वर्या जी, एनी डाउट? No, sir. मिस्टर रुद्र, डाउट? नहीं. Yeah, I've told you before, you kids are in class 7th, still you are doing this. This is something which is usually taught in class 9th or class 10th.
फिर से देखिए, Yeah, I got it. ऐड कर दीजिए। नहीं, ये ठीक है। हाँ, इसमें तो आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है, ठीक है, आपने सब्ट्रैक्ट किया तो Yeah. 2q plus 3q is 5q. Now 14 plus 6 is 20. अच्छा, q is equal to 4. This is correct. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। So should I only redo the sums that are wrong or the whole Yes, thing? yes, only the wrong sums. Only the wrong sums. Okay. Only the wrong sums. Okay. Last question 9 देख लीजिए। तो ये आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। यू नीड टू सब्ट्रैक्ट। परफेक्ट, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 7s is equal to 7 s equal to 1 और फिर आपने s is equal to 1 इक्वेशन नंबर 2 में डाला और हा हा हु ही सम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक फिर से वही गड़बड़ा। आपको दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। Yeah. अब जब ऐड करेंगे तो 7t is equal to 2t is equal to 2 by 7. ऐश्वर्या जी, एनी डाउट? No, sir. समय जी, एनी डाउट? So can you explain the 10th question? Explain the 10th question. Okay. Samay, this is your sheet? Yes, sir. Okay. So, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 2। ओके, ठीक है। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। Then you added the two equations. Adding the two equations, so this gets eliminated. This is t equal to 2 by 7. Then put value of t is equal to 2 by 7 in equation। कौन सी इक्वेशन में डालना है सौम्या जी? फर्स्ट इक्वेशन में डालना है, ठीक है। Equation, sir. 4 by 7। अब देखिए, v is equal to, ये क्या गड़बड़ कर रहे हो यार? Yes, sir. Okay. So 4 by 7 plus u is equal to 1, correct? Yes, So sir. u is equal to 1 minus 4 by 7, correct? Yeah. 3 by 7. तो ये क्या लिख रहे हो आप? This should be 1 minus 4 by 7. Okay. Any doubt? Yeah, no doubt, sir. Okay. So, Samay, do we need to discuss other questions? Because I think you have done the questions okay. Do we need to discuss? No, sir. ठीक है, आपका I think सारा आपने ठीक ही किया। Do you have answers at the end of the book? No, the teachers give it to us. Okay. Do you know how to check the answers? No, sir. Sanvi ji, how can we check the answers? You have to just save the all
add up correctly in the equation. So in this case, my f is 3 and g is 2. F is 3 and g is 2. So Aishwarya ji, what do? I go to this equation or I go to this equation, any of the equation that you like. Yeah. And then I put the value of the f that I've got in this equation. Any doubt? Any doubt? No, Samaj ji, sir. any doubt? Hello? No, sir. Aishwarya ji, any doubt? No, sir. So basically what you do is whatever answer that you get, for example, this is the answer that you get and g the value, the answer that you get, you go back to any of the equation, maybe equation 1 or equation 2, whatever you want. And you put the value in any of the equations and it should be equal to the right hand side. Mr. Hudur, कोई doubt? नहीं sir. Let us assume k is 3 and L is 4. K is 3, L is 4. So what will I do? I'll go to this equation because this seems easier to solve. So 3 times 3 plus 4. 9 plus 4 is 13. What is written here? 5. So is the answer correct? No, sir. Aishwarya ji, any doubt? No, sir. तो कुछ गड़बड़ हुई है, अब वो हमें चेक करना है कि क्या गड़बड़ क्या हुई है, देख लेते हैं. I had to add over here. Okay. सानवी जी, have you understood the logic? Yes, sir. तो ये गलती की है आपने, ये देखिए आपने माइनस कर दिया. देखिए बात समझिए, अगर आप माइनस कर रहे हैं बेटा तो 2k माइनस 6k माइनस 4k यहाँ पर खड़ा है, ये -2l है, ये -2l है, -4l भी यहाँ खड़ा है, कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा. सौम्या जी, एनी डाउट? No, sir. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको चेक कर लीजिए प्लीज. So n is 5 and m is 2. N is 5 and m is 2. So I go to this equation. M is 2, sorry. So twice of 2 plus twice of 5. 4 plus 10 is 14. So this answer is correct. Samaj, have you understood? Yes, sir. So all the answer that you get, Q is equal to 4 and P is equal to 3. Q is equal to 4 and P is equal to 3. I can go to any of the equation. Let me go to this equation. So twice of P is 6, minus 12 is -6. This is -6. So this is correct. Mr. Rudra, समझ आ रहा है? हाँ sir. Seems to be correct. यहाँ कुछ आग लगी है. I think this part is correct. 3/7 is correct. उसके बाद फिर क्या हुआ? 60 कहाँ से आ गया? अच्छा ये 60 plus
3u, u is 3 by 7 is equal to 3. Sanvi, is it okay? Yes, sir. Sanvi, see, one thing that you need to understand is ये जो equation, this equation has come from this original equation. Have you understood? Yes. So what is always advisable is rather than using this equation, go to the original equation, any of the original equation, and put the value of u or v, whatever this is, in these original equations. Sanvi, have you understood? Yes, sir. तो बेटर ये है, ये देखिए, ये इजी इक्वेशन है 3t minus 2u is equal to 0. आप जो ये वैल्यू है ये इस इक्वेशन में डालिए. So 3t minus twice of 3 upon 7 is equal to 0. 3t is equal to 6 by 7. t is equal to 3 by 7. Any doubt? मैंने कुछ गड़बड़ की है शायद. So ठीक है. I think you only had to multiply first equation with 2. You don't need to multiply both the equations with 3 or 2. Okay. Yes. No, but Now actually, final. I eliminated T. Hey, I did not वो ठीक. eliminate U. वो समय दैट इज योर पर्सनल डिसीजन. आप जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो यहाँ मैंने थोड़ी सी गड़बड़ यही की है. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 by 7. हैव यू अंडरस्टूड? एंड इफ आई वांट टू चेक, व्हाट विल आई राइट? 3 into 2 by 7 minus 2 into u. What is my u? My u is 3 by 7. So this is 6 by 7 minus 6 by 7, which is equal to 0. Samay ji, any doubt? No, sir. Sanvi ji, any doubt? No, sir. Aishwarya ji, any doubt? No, sir. तो ये देखिए, तो अब देखिए हुआ क्या. अब अगर आपने, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है. इस इक्वेशन में इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गड़बड़ क्या हुई है. सी, वन ऑफ द प्रॉब्लम इज व्हाट सौम्य इज सजेस्टिंग कि यार आप ये तामझाम कर क्यों रहे हो. What you should do is you should take this equation, multiply both the side of the equation by 2, so that this becomes 4t plus 2u is equal to 2. 3t minus 2u is equal to 0. ये easy है, आप इनको ऐड कर लो. 7t is equal to t और t is equal to 2 by 7. Sanvi ji, any doubt? No. तो rather than ये करने के जिसमें lot of calculations are required, you just look 1 minute at this equation and you see the easier way of doing this equation. And once you have the value of t, you go back to the easier equation, which is this equation. ये easy है. इसमें आप t की वैल्यू डाल दीजिए और u की वैल्यू निकाल लीजिए. ऐश्वर्या जी, any doubt? No, sir. अच्छा, खैर आपने वो नहीं किया. You want to do it my way. तो फिर जब आपने ये करना शुरू किया तो then you got lost, I think, somewhere in doing the sum. So 6t is equal to 3 minus 9 by 7. 6t is equal to 7 3 21. ठीक है, ये 12 by 7 भी आ गया. तो 6t is equal to 12 by 7. अच्छा, t is equal to 12 by 7 divide by 6. उसके बाद या तो आपने किया नहीं या मुझे स्कैन नहीं भेजा. I don't know what. So this will be equal to 12 by 7 into 1 by 6, and this will be equal to 2 by 7. Sanvi ji, any doubt? No, sir. Shabash. So any doubt in elimination still? अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. See, what I'll suggest is again, Aishwarya ji,
and Sanviji, whatever sums which are incorrect, you should do them again. Do incorrect Okay. sums. Do incorrect sums. And another thing that you can do is that please try to check your answers. Check your answers. Okay. So, for example, Soumya has done whatever equations that I had given. Now, what she should do is she should go back to her. For example, if she had done this question, she should go back to this question. B की ये value थी, C की ये value थी, and she should try to check the answers. Soumya ji, have you understood? Yes, sir. Because the same elimination will come in your class 10th exams also. Class 10th exams also. तो ये 2-3 साल आपके साथ चलने वाला है. ऐश्वर्या जी, any doubt? No, sir. तो आप जितना अच्छा करेंगे उतना आपके लिए बेटर है.